Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Very venerable viewers, today we are going to emphasize and talk about social relationship in psychosocial development of child. And we are going to talk about the peer relationship, social relationship. First of all, we'll see. World and their places are the interactive places, and different places, different people, they are interacting, and they exchange their emotions. They feel something and they react very intelligently, and they are developing their emotional stability while interacting with other situations. And same one, satisfying relationship is the opportunity to the individuals के relationship जब develop होते हैं तो वो अपने बहुत सारे emotions को satisfy कर रहा होता है, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीख रहा है जो उसके अंदर वो stability develop कर रहे हैं. Like social relationship is a source of maintaining and controlling the emotions like aggression, or sometimes it's a positive opportunity of our children to get opportunity like play, and specifically the play will provide the opportunity to communicate by gestures, by symbols, and also the change in actions, change in behavior, to tolerate, to stop myself, not to interact in the restricted situation. ऐसी सिचुएशन में मुझे इंतज़ार करना है, मुझे उसको देखना है, और मुझे उसको ऑब्जर्व करना है. एंड व्हेन वी गेट द अपॉर्चुनिटी, आई टू इंटरैक्ट, आई टू एक्ट, तो ये सारी चीज़ें बच्चा उन एनवायरनमेंट में सीख रहा होता है, और उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर गोइंग टू बी develop with the passage of time. Further, they get the opportunity of parallel play. What the parallel play is, the child imitate the individuals who are playing together, the elder ones are acting, and the junior one is imitating and waiting how the other is performing, and they would like to play, and they would like to activate ourselves in a situation in which the same situation they will be ready to get, and they will ready to act upon for the particular situation. और इस पैरेलल प्ले में बच्चे जो है ना बहुत सारी चीज़ें, उसके एक्शंस, दूसरों के एक्शंस, दूसरों के पॉजिटिव एक्शंस और नेगेटिव भी सीख रहे होते हैं, लेकिन वी टू मॉनिटर फॉर द पैरेलल प्ले हाउ दे आर being in getting the points positive or negative, we to be vigilant about the positive points. At the other stage is interactive play. Interactive play, whatever they have learned, they execute. वो अपने आप को फिर वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे by the 3 to 4 year children often have the opportunity to interactive play. उनकी अपनी भी कुछ सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो बाकी बच्चों के साथ भी इंटरेक्टिव करते हैं. जिस तरह उसने कहा उसने उसी तरह उसका जवाब दिया. एंड दे आर गेटिंग, दे आर टॉकिंग वाइल प्लेइंग, दे आर कमेंटिंग, they are observing and they are commenting and they are indicating symbolically, and they are using their body language, and they are reacting, and they are stabling others. दूसरे को कुछ हो गया, they are also helping, and they are learning how to help others, and they are thinking about a new play. They are thinking about the creativity. It is all due to the interactive play. We'll see here cooperative play. Cooperative play में ये होता है कि it is a complex task, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें parallel play भी है, जिसमें interactive play भी है, और जिसमें हम देखते हैं कि 5 to 4 years age में they share
with each other for a single goal, or team like play, और एक हम टीम है और एक आप टीम है, और दो टीम में जो है ना वो आपस में शेयर करते हैं चीज़ों को, और जो ग्रुप है वो ग्रुप आपस में शेयर करता है और वो दूसरे ग्रुप के साथ इंटरैक्टिव होता है, और दे आर इंटरैक्टिंग विद इन अ ग्रुप एंड दे आर also interacting with the other group, but the goals are different. ये बच्चों के प्ले में दे गेट अपॉर्चुनिटी, और उनके सोशल रिलेशन इस लिहाज से स्ट्रांग होते हैं, और उनकी जो इंटरैक्टिव एबिलिटी है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, दैट इज आल्सो बीइंग डेवलप्ड बाय दीज सोशल अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू वेरी मच.